And I am the administrator of PARSA ECHO Pakistan. I welcome you all on today's session, which is not only beneficial for our general practitioner, our usual spokes, but also for the general public who is usually worried about the risk and complications during the fasting and how it can affect the liver health. I am the co-facilitator for today's session, along with our director, Dr. Asad Ali Chaudhry. Today's topic is chronic liver disease patients in Ramadan, fasting, do's and don'ts. Our expert panelist is Professor Javed Iqbal Farooqi. He is FCPS Gastroenterology, FCPS Medicine, retired professor of medicine, Lady Reading Hospital, Peshawar. The session is in collaboration with Pakistan Society of Hepatology, and we are also thankful for unrestricted educational grant by Feroson's laboratory. Before I hand over some standard announcements, we are part of a global movement called Project ECHO based in USA, and our objective is to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any patient or individual. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself after the presentation and use the raised hand option and chat box for questions. For CME credits, please contact us 0 Kiran, you are muted. For how long? Just for a few seconds, so it's all right. You can continue. Okay. For CME credits, please contact Uzair for our coordinator. His number is mentioned on the banner. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. So without further delay, I will hand over to Dr. Asad Ali Chaudhry. Sir, I think Dr. Asad is offline. Professor Altaf, may I request you to please take over the charge? Thank you, Kiran. Certainly, it's a very important topic with upcoming Ramadan, and we all deal with chronic liver disease patients. And it is our proud privilege to have a very good speaker, a very learned person with us, who is going to talk about this very important topic. So without further delay, I would request my colleague, Professor Javed Iqbal Farooqi, to please start his presentation. Over to you, Javed. Thank you, Professor Altaf Sahab. Thank you very much. Thank you, dear Asad and the whole team. And I'll share my screen with you people. Can you see my screen? No, sir, not yet. But okay. I read the message. Javed Farooqi has started screen sharing. Yeah. I think now you can see. Yes. Now we can see the slides, but it's not in the slide mode. Yeah, it will be in the, yeah, I think just a minute. Yeah. Is it okay now? Yes, sir, perfect. Okay, thank you very much, Professor Altaf Alam and the whole ECHO team. The topic which has been assigned to me is the chronic liver disease patients in Ramadan fasting, do and don'ts. As Professor Altaf Alam elaborated and said that next week we are going to be in the Ramadan. So this is a very, we all know about that the Islamic calendar is the lunar based, and every year the Ramadan comes earlier 11 days. And now when the duration of the fast is
around 16, 17, 18 hours. And we all know that the type of the food is changed in this Ramadan, and the calories content is also changed because of the customs. We all know the exemptions from the Ramadan by the Islamic teaching. I don't need to discuss that. Everybody knows that the prepubertal children, the women during their menstrual period and postnatal bleeding, the pregnant and breast feeding women, elderly, mentally retarded travelers, sick people. Thing is that when now from the last week or so, the patients do come and they do ask few questions. Should I fast or not? कि डॉक्टर साहब मैं रोजा रखूं या ना रखूं? And especially the people or the patients who are having the liver disease, अमूमन वो आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब will harm my liver further or not? उनको खदशा रहता है कि आया मैंने हेपेटाइटिस जिगर की बीमारी गुजारी है तो क्या मैं रोजा रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं? Many people, they are afraid of fast and they think that probably the fast will increase their disease, so they want not to fast. वहाँ के आपसे ये फतवा लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो रोजा नहीं रखना ना, क्योंकि मैं तो बीमार था या मैंने हेपेटाइटिस गुजारा है या इस तरह की चीजें होती हैं. So what's your advice on this? ये एक बहुत होता है, good chunk of patients, they come and they say जी मैंने तो रोजा नहीं रखना, आपका क्या ख्याल है? या आप मुझे कहें कि मैंने रोजा नहीं रखना. तो वो रोजे से बचने के लिए एक चीज होती है कि वो डॉक्टर से वो फतवा लेना चाह रहा होता है. और ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि जो बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू रिफ्रेन फ्रॉम फास्ट, प्लीज एडवाइस, कि वो रोजा छोड़ना ही नहीं चाहते. तो ये एक बड़ा ट्रिकी सी सिचुएशन हो जाती है व्हेन यू हैव टू आंसर एंड एडवाइस देम. ऑफ कोर्स एज अ मुस्लिम our advice will be according to the Islamic teachings, but of course it should be evidence based. कि ये नहीं है कि आपके दिल में है कि जी ये जरा कमजोर सा लग रहा है या मैं बोलूं बस ठीक है अक्रॉस द बोर्ड अब हर एक को बोलें कि रोजा रखना है, नहीं रखना है, लाजमन रखना है. It should be logical and it should be in clear words. ये भी नहीं कि आप ऐसे मिक्स जवाब दें कि जी देख लें रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो ये तो फर्ज भी है, बीमार भी है. इससे पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है. तो आपने बड़ा क्लियरली बोलना होता है कि आया आप रोजा रख सकते हैं, नहीं रख सकते. अगर रख सकते हैं तो फिर आपने आगे जाके क्या प्रिकॉशंस लेनी है या नहीं लेनी है. तो इस प्रेजेंटेशन में मैं ट्राई करूंगा कि ये जो हम डिसीजन मेकिंग है हमारी, ये जो हम पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं, वो लॉजिकली और एज अ रैशनल हम कैसे दें. ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग में हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स को कि आया मेरे पेशेंट्स को जॉन्डिस है कि नहीं है. अगर वो सिरोटिक है तो कोई हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी तो नहीं हुई या उसमें तो नहीं है, जे ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, असाइटिस अभी है या प्रायर हिस्ट्री तो नहीं है, वेदर माय पेशेंट इज हैविंग दिस HCC, उसकी नरिशमेंट की स्टेटस क्या है. एंड on the top of this we do look into the investigations like serum bilirubin, serum ALT, serum alkaline phosphatase, PTINR, ये कैसे हैं, renal functions की क्या status है. Diabetes is a very common phenomena, और हमारे good chunk of our patients, the liver patients, they are having the diabetes as well. तो आया उसकी क्या status है, electrolytes and ultrasound. So when we decide to give the advice, it is not only on our own, simple judgment, it is based on the clinicals as well as the different investigations. तो उनकी अगर एक सिंपल, अगर मैं एक शॉर्टकट में बोलूं, समरी में बोलूं, तो अगर लिवर फंक्शंस एलिवेटेड है तो बाय एंड लार्ज वी से कि डोंट फास्ट. अगर पेशेंट इज अनेबल टू टॉलरेट बिकॉज ऑफ द डिजीज, अगेन दिस इज द वे, डोंट फास्ट. अगर आप समझते हैं कि पेशेंट में नॉट टॉलरेट तो आप कह सकते हैं कि जी फास्ट करें, रोजा रखें, लेकिन ऑब्जर्व करें. लेकिन ये एक सिंपल सी है, चीजें इतनी आसान नहीं है. हम करेंगे क्या, मैं इस नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में आई जस्ट ट्राई के अपने एडवाइस को हम बेस करें कि आया हमारे पेशेंट्स की लिवर स्टेटस क्या है. आर पेशेंट्स में बी हैविंग जस्ट हेल्दी लिवर, ही मे बी हैविंग एक्यूट हेपेटाइटिस, या वो क्रोनिक हेपेटाइटिस का पेशेंट हो सकता है, या वो लिवर सिरोसिस, जिस तरह जैसे डिजीज बढ़ती जाती है, या हमारा पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट भी आ जाते हैं.
जो कि हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने रोजे के बारे में क्या रखना है। तो मैं करूंगा क्या कि हर कंडीशन में देखूंगा कि लिटरेचर क्या कहती है और हमने एडवाइस कैसी देनी है। टेकिंग दिस फर्स्ट, एक्यूट हेपेटाइटिस में एक्यूट लिवर फेलियर का चांस है तो फिर हम हमारी ओपिनियन डिफरेंट होगी। क्रोनिक हेपेटाइटिस वी ऑल नो द कॉमन इज द NAFLD, chronic hepatitis B and chronic hepatitis C patients. Liver cirrhosis again टाइटल एक है, लेकिन हमारा पेशेंट में भी having compensated or decompensated liver disease, and of course liver transplant, post liver transplant scenario. Let's take the healthy liver. हेल्दी लिवर में हम क्या एडवाइस करेंगे। We all know कि impact of Ramadan on the body is particularly important जब रमदान कोइंसाइड्स करती है हॉट ड्राई समर एंड लॉन्ग डेज के साथ, और दो अगरचे हम अप्रैल की तरफ मूव कर रहे हैं, आ रही है हमारे रमजान, लेकिन स्टिल इट्स रियली क्वाइट हॉट एंड ड्राई, स्पेशली इन कराची एंड अदर एरियाज में। तो वी ऑल नो कि रमदान इज एसोसिएटेड विद स्टारवेशन, डिहाइड्रेशन एज द डे गोज ऑन, और जैसे जैसे हमारे वो दिन गुजरते हैं चेंज होती रहती है। चेंज इन द डाइटरी स्टाइल, इंक्रीज इन द गैस्ट्रिक एसिडिटी, डेफिनेटली इट हैपेंस। जो हमारी खुराक होती है, अब जो सहरी में खाते हैं और उससे भी नेचुरली हो जाता है, अफ्तारी में जो हमारी बड़ी स्पाइसी चीज़ें होती हैं एज ए ट्रेडिशन, एंड डिक्रीज इन द प्लेटलेट रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट एग्रीगेटिंग एजेंट्स। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि रमदान का एक बॉडी पे इफेक्ट होता है। इफ यू सी द लिवर, कि लिवर पे रमदान का क्या इफेक्ट होता है, तो the fasting results in significant improvement in BMI as a whole, blood lipid profiles, oxidative stress criteria, adipokines and histological hepatic steatosis इसमें improve करती है। adipokines में जो कि वेस्पिन एंड ओमेंटीन 1, इस पे इसका इम्पैक्ट होता है, चेंज होती है। एंड वी ऑल नो वेस्पिन alters the inflammatory response, insulin resistance, and NAFLD. Omentin 1 is independently associated with liver ballooning. इस तरह interleukin 2, A, TNF and ALT significantly इनमें डिक्रीज आती है विद रमजान। एक है प्रोटीन ग्रोथ अरेस्ट DNA डैमेज इंड्यूसिबल बीटा प्रोटीन, it has got its own significance जब हम लिवर की बात करते हैं, and we all know that it's involved in the regulation of the growth and apoptosis in the cells, especially hepatocytes. It mediates many biological processes, and the one of this is controlling absorption of fatty acids in the liver. So अगर GADP 45 का level increase होता है तो decrease होता है, तो it increases the fat accumulation in the liver and elevates the blood sugar level. अगर ये high होता है तो it goes the inverse way. इसलिए इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रखिएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस आ जाती है नेफल में हमारे जब हमारे पेशेंट्स नेफल के होते हैं और जब वो फास्ट करते हैं। ये हमारे सुल्तान अहमद चांडियों ने मेरे साथ एक शेयर किया था। उन्होंने एक उनके प्रेस इनकी एक स्टडी है जो उन्होंने क्रॉस सेक्शनल स्टडी की थी चानका मेडिकल कॉलेज में, and what they found कि Ramadan fasting has a statistically significant effect on biochemical parameters except the PT-INR. So liver, another study, 57 healthy people, which included 35 males and 22 females. Age was the young age, and they were recruited. The LFTs को observe किया गया, which included the bilirubin, ALT, AST, and alkaline phosphatase and albumin 4 times before Ramadan. Ramadan की शुरू से पहले उनका चेक किया। This is another study, not the one which I mentioned. उसकी मैं डिटेल शेयर नहीं कर सकता because that's still in press. लेकिन ये एक पब्लिश्ड आर्टिकल है जो कि 2016 में आया। तो उन्होंने ये तब पैरामीटर्स चेक किए बिफोर रमजान, ड्यूरिंग रमजान, द सेकंड एंड लास्ट वीक्स में, एंड अ मंथ आफ्टर द रमजान, एंड व्हाट दे फाउंड कि बिफोर रमजान जो बेस लाइन थे बिलिरुबिन, ALT, AST, alkaline phosphatase, albumin, दिस इज नॉर्मल लिवर की बात हो रही है। ड्यूरिंग रमजान सेकंड वीक में तो यही था, लेकिन फोर्थ वीक में इनमें राइज बिलिरुबिन में थोड़ा सा आया, and that remained after 1 month of the Ramadan. ALT पहले डिक्रीज कर गई, फिर उसी पे स्टेबल रही। AST थोड़ी सी राइज कर गई। एल्कलाइन फॉस्फेटेज पे कोई इफेक्ट नहीं था। एल्बुमिन
रमदान में थोड़ा सा लो हो गया था लेकिन बाद में रिकवर कर गया. So these are the impact of Ramadan on a healthy liver. So what they concluded, it has got statistically significant effect on the ALT, gland phosphatase and bilirubin level, or mild changes in the liver tests are probably related to the cytokines and alterations. So what we conclude कि अगर liver normal है, किसी को अगर past history भी है hepatitis की है, acute की या treated chronic hepatitis B या C है, लेकिन अब इसका liver normal है, तो fast promotes health of normal liver. फास्टिंग या रोजा उसके लिवर को मजीद हेल्दी करता है. एक और है जो गिलबर्ट सिंड्रोम, वी ऑल नो दैट, कि जिसमें फास्ट में इसका बिलिरुबिन ज्यादा हो जाता है, लेकिन दिस इज नॉट अ काउंटरइंडिकेशन. इन पेशेंट्स का बिलिरुबिन आदमी को मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन पर से लिवर को कोई डैमेज नहीं हो पाता. तो नॉर्मल लिवर में या वो पेशेंट्स जो हेपेटाइटिस गुजार चुके हैं, अब इनका लिवर नॉर्मल है, फास्टिंग विल फर्दर प्रमोट देयर हेल्थ. So normal liver में there is no contraindication, past history of the acute hepatitis or treated chronic hepatitis B or C. So please encourage and they should fast. अब आइए वो पेशेंट जो कि acute hepatitis में है और जो कि acute liver failure की तरफ जा सकते हैं, या कोई भी acute hepatitis patients, we all know कि it is a disease of 4, 5, 6 weeks. We all know it has got malaise, anorexia, nausea, vomiting, etc. Patients are treated with supportive measures. At times उनको hospitalization की जरूरत भी होती है. और यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारा पेशेंट acute hepatitis है, चाहे B है, C है, या कोई और etiology है, A है या E है, fasting is religiously forbidden. ऐसे पेशेंट्स के लिए वैसे भी एक जो जनरल प्रिंसिपल है कि अगर आप बीमार हो तो आप रोजे ना रखें और आप रोजों को बाद में शुमार कर लें. So these patients should be strongly advised not to fast, because अगर ये fasting करेंगे, what will happen कि इनकी duration of fasting is very prolonged, इनके liver पे deleterious effects हो सकता है. तो अगर हमारे patients normal liver है उसका, फिर तो रोजा रखे. लेकिन अगर उसको currently acute hepatitis है, इसकी deranged liver functions हैं, कोई भी etiology हो, इस patients को रोजा रखना मना है. तो यहाँ पे आपकी ट्रैफिक की ग्रीन लाइट है और यहाँ पे आपकी ट्रैफिक की रेड लाइट है. अब देखते हैं कि हमारा जो अगर पेशेंट्स क्रोनिक हेपेटाइटिस में है, चाहे वो नेफल्ड है या हेपेटाइटिस बी है या सी है, फिर हम क्या एडवाइस करेंगे, स्टडीज क्या बोलती हैं, डेटा क्या बोलता है, ताकि हम जो एडवाइस करें वो एडवाइस हमारी मेडिकली भी सही हो और उसमें हमारे सर पे भी कोई गुनाह ना आए, और पेशेंट्स भी जो है ना अगर रोजा नहीं रखता है या नहीं रखता तो अकॉर्डिंगली होना चाहिए. इस तरह मैंने बोला कि रमदान फास्टिंग या फास्टिंग जो है ये लिवर को हेल्दी करता है. तो नेफल में एक स्टडी पब्लिश हुई, 50 नेफल पेशेंट्स एज 18 to 65, मेल फीमेल बोथ, and fasting serum levels of liver function tests including the lipid profile and blood sugar, insulin, these were checked 7 days before Ramadan and 27 days Ramadan to 6 days after Ramadan. And what happened, ye parameters hain, ye wo these are the male, these are the females before Ramadan or after Ramadan. And what they found ke caloric intake was definitely there was change in that because of the जो habits होती हैं. लेकिन all parameters जो कि HDL है, LDL है, triglycerides है, उन पे healthy effect आया, they improved, ALT improved, AST थोड़ा सा rise कर गया था, लेकिन then it improved. So what the study said and what is the common teaching, कि अगर patients हमारा purely NAFLD है या NAFLD with diabetes है और diabetes control है, तो these patients must fast. This is a green signal over here. Ramadan fasting, it significantly improves the NAFLD patients. इनका इंसुलिन लेवल डिक्रीज होता है, एलटी, इसके ब्लड प्रेशर लेवल्स डिक्रीज होते हैं और इसका एचडीएल लेवल्स भी इंक्रीज हो जाता है. तो इट्स अ हेल्दी फास्टिंग फॉर पेशेंट्स ऑफ नेफल्ड. Most of these patients and many of these patients they are diabetics as well. तो यहाँ पे डायबिटिक कंट्रोल को आपने देखना होता है या आया उसकी जो डोजेज है, लेकिन पर से नेफल्ड पेशेंट्स रमजान में उनको फास्टिंग रखनी चाहिए. इट विल इंप्रूव देयर biochemistry of the because of the NAFLD or NASH. Coming to chronic hepatitis B or C, बड़ी interesting study आई
या एक ऑब्जर्वेशन थी कि ट्रांसजेनिक माइस मॉडल में फास्टिंग इंक्रीज द लेवल्स ऑफ वायरल प्रोटीन्स, ट्रांसक्रिप्ट्स एंड रेप्लिकेशन। और इस स्टडी में HB levels, they were approximately 40% raised during 48 hours of fasting, और 10-fold increase हुआ the liver B hepatitis B के synthesis में, secretion में और infection of new hepatocytes में। लेकिन ये स्टडी मौजूद है, लेकिन it couldn't be confirmed in clinical studies। तो एक एनिमल स्टडी से there was a danger कि शायद हेपेटाइटिस बी प्रोलिफरेशन ज्यादा हो जाएगी, लेकिन in human beings or clinical studies it could not have been confirmed। इसी तरह हेपेटाइटिस सी के भी रेप्लिकेशंस के कई स्टेप्स हैं जो कि फास्टिंग स्टेट में और फिट स्टेट में डिफरेंस उनका होता है, लेकिन नो स्टडी हैज शोन के फास्टिंग का क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सी पे अगर वो स्टेबल है, इस पे कोई डेलेटेरियस इफेक्ट है। To evaluate the efficacy of fasting in Ramadan on clinical lab and ultrasonic findings in these patients, 202 patients were included. The study, which was published just in 2011, and what they found कि कोई चेंज नहीं आया हेपेटाइटिस बी या सी में जिन्होंने फास्टिंग रखा प्री रमदान, ड्यूरिंग रमदान, इन पोस्ट रमदान। तो यहाँ पे जो जनरल कंसेंसस है या जनरल एग्रीमेंट है या जो एक रिकमेंडेशंस होनी चाहिए या जो हम कह सकते हैं कि बेसलाइन लिवर फंक्शंस डोंट डिटोरिएट ड्यूरिंग द रमदान इन क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी पेशेंट्स विद नॉर्मल लिवर। लेकिन अगर उसके और पैरामीटर्स डिरेंज्ड हैं तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, और अगर उसके नॉर्मल बीते फिर भी आप ड्यूरिंग रमदान उसके LFTs और RFTs को मॉनिटर करना चाहिए। अगर these patients they are diabetics, again आपको वही कंसिडर करना चाहिए कि डायबिटिक स्टेटस कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है, क्या हिसाब है। अगरचे मैंने बोला कि एनिमल स्टडीज थी कि जिसमें HBV प्रोलिफरेशन ज्यादा हुई थी, लेकिन अब तक क्लिनिकल स्टडीज कोई भी ऐसी नहीं आई है, लेकिन फिर भी वन शुड बी केयरफुल एटलीस्ट विद द ALT एंड बिलिरुबिन लेवल्स। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और स्पेशली अगर सॉफ्ट बेस्ड एविटी है हेपेटाइटिस सी में, तो अगेन किडनीज फंक्शंस शुड बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज वी नो 80% ऑफ द सॉफ्ट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज, और रमजान में डिहाइड्रेशन होती है। तो ये कंडीशन B एंड C, दिस इज द येलो, जहां पे आपको जरा मॉनिटरिंग चाहिए होती है। तो व्हाट वी अंडरस्टूड टिल नो कि अगर हेल्दी लिवर है तो द पेशेंट शुड फास्ट, अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है शुडंट, अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस है, NAFLD है, फिर तो लाजमी रोजा रखना चाहिए, लेकिन अगर B और C है तो रोजा रखे, लेकिन आपने क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। अब आते हैं लिवर सिरोसिस पे कि हमारे लिवर सिरोसिस में हम क्या एडवाइस करेंगे और डेटा क्या बोलता है। डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा पेशेंट्स चाइल्ड क्लास A में है, B में है और C में है, क्योंकि इसके ऊपर हम वेरी करेंगे कि जिस क्लास में होगा उसी पे हमारी ओपिनियन बेस होगी। We all know कि liver cirrhosis has got two main phases, the compensated and the decompensated phase, and decompensated is the one कि जहाँ पे कोई वायरसेस भी नहीं है, कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई है, और decompensated जो कि अर्ली है कि जिसमें या तो ब्लीडिंग हो जाती है या अनकम्प्लिकेटेड एसाइटिस है या मे बी के इसको HE है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का कोई अकल्ट या 1-2 एपिसोड्स हुए हैं, लेकिन अब ठीक है। एडवांस्ड वी ऑल नो कि एसाइटिस रिफ्रैक्टरी हो गई, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई या बार बार उसको HE हो रही है। दिस इज द क्लिनिकल segregation of the cirrhotic patients, लेकिन वी ऑल नो कि चाइल्ड क्लास A से लेकर पूरे स्पेक्ट्रम में एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि राइज हो सकती है, दैट इज द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। वी ऑल नो कि इसकी इंसिडेंस जो है, ये इसकी प्रिवेलेंस जो है, वो जैसे जैसे डीकम्पेंसेशन ज्यादा होती है, इसका चांस ऑफ अकरेंस भी ज्यादा होती है। इस तरह एक और है एक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेलियर। लेकिन एक और चीज जो कि हम मिस कर जाते हैं, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। दिस इज अगेन कॉम्पेंसेटेड में इसका रिस्क कम है, लेकिन जैसे जैसे हमारा पेशेंट डीकम्पेंसेशन में बढ़ता है और उसका CTP क्लास स्कोर ज्यादा होती जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो व्हेन वी मेक अ डिसीजन अबाउट द फास्ट, डेफिनेटली ये तमाम चीजों को हमने जहन में रखना होगा और उसी के मुताबिक वी हैव टू
proceed. We all know that this is the cirrhosis has got the portal hypertension and impaired liver functions as the main underlying pathology. And these patients, this is another important fact that they've got inadequate caloric intake. Why? Because of the poor appetite, early satiety, because of the ascites, nutrition malabsorption इनकी है, poor glycogen store इनका है, जिस वजह से मैंने बोला कि इनमें hypoglycemia के chances जैसे जैसे decompensation बढ़ती है, ज्यादा होती जाती है. The same is with the malnutrition. Child class A में around 20-25% of these patients they are malnourished. लेकिन अगर हम child class C के patients को देखते हैं, majority of them, almost all of them, 80 to 90% of them, they are malnourished. तो तमाम चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के हमने एक लॉजिकल एडवाइस देनी होती है. चैलेंजेस क्या है? ये पेशेंट्स डिफरेंट मेडिकेशंस पे होते हैं, तो ये भी हमें रखना चाहिए कि आया उनकी मेडिकेशंस की फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करेंगे, टीडीएस है उसको बीडी पे लाएंगे तो फिर रोजों में हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. इसके बाद एक और चीज है कि अगर हमारा सिरोटिक पेशेंट रोजा रखता है तो अफ्तारी के बाद जब पोस्ट प्राइमरल हाइपरीमिया है तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें बिकॉज ऑफ द पोर्टल प्रेशर ज्यादा होगा, चांसेस हैं कि मे बी के ब्लीड कर जाए. इसी तरह डायरेटिक पेशेंट्स अगर प्रोलॉन्ग डेज हैं और ये रेगुलर डायरेटिक्स पे है तो अगेन द चांसेस ऑफ द डिहाइड्रेशन एंड रीनल शट डाउन. तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस आर चैलेंजेस इन दीज पेशेंट्स. तो रिस्क है कि अगर ये पेशेंट रोजा रखेंगे तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, डिटोरेशन ऑफ द लीवर फंक्शंस, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और जीआई ब्लीड. तो इन रिस्क को सामने रखेंगे, चैलेंजेस को पे नजर रखेंगे, जो इनकी स्टेटस है उनको देखेंगे एंड ऑफ कोर्स उनके स्टेज को कि अब हमने क्या डिसाइड, क्या बोलना है, क्या एडवाइस देनी है. देयरफॉर जो हमारा एक्शन प्लान होगा इट विल बी इंडिविजुअलाइज्ड. हम अक्रॉस द बोर्ड नहीं कह सकते कि तमाम सिरोटिक्स रोजा नहीं रख सकते या हर एक को रोजा रखना चाहिए, क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए. इट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स. इवन चाइल्ड क्लास एम भी ऐसे पेशेंट्स होंगे कि जो रोजा को हम उनको एडवाइस नहीं कर पाएंगे. द रीजन विल बी सपोज चाइल्ड क्लास ए में असाइटिस नहीं है, एच उसको नहीं हुआ, एल्बुमिन हम उसको रेगुलरली एल्बुमिन दे रहे हैं, उस पे वो चाइल्ड क्लास ए में आ रहा है लेकिन ही इज ऑन ड्रग्स और शी इज ऑन ड्रग्स. तो यहाँ पे क्या बोलें? तो वी हैव टू टेक द पेशेंट एज अ होल, नॉट एज सिर्फ क्लिनिकल पिक्चर्स या इन्वेस्टिगेशंस को नहीं देखने हैं. ये कुछ 2-3 स्टडीज मैं आपसे शेयर करूंगा. दिस वाज वन स्टडी व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 2011. अगेन व्हाट दे फाउंड कि इन्होंने क्रोनिक हेपेटाइटिस और सिरोटिक्स के पेशेंट इंक्लूड किए रमजान में. व्हाट दे फाउंड कि अगर हेपेटाइटिस के पेशेंट थे तो उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन those who were cirrhotics and those who were advanced, the chance of GI bleeding, it was really higher as compared to the one कि जिनमें child class A थे या जो quite stable थे. Another study which was published in 2011 again, यहाँ पे भी 216 patients थे, and what they found कि advanced या decompensated में chances of the variceal bleeding or chances of the HE, they were more as compared to the early compensated cirrhotics. Again, another study which was published again in the 2016, the same findings here were as the decompensation increased, the chances of complication increased. And again, this was another study. This is very interesting, which was from the Egypt. And what they found, they observed the patients in June, July 2014, where we all know the Egypt का मौसम भी पाकिस्तान की तरह है, बल्कि उससे भी ज़्यादा hot and dry है. Daytime was more than 14 hours. And what they found, 40 cirrhotic patients, congestion index they calculated in the fasting 12 p.m. pe and postprandial status 2 hours after the iftar, or as a non-invasive indicator of the short-term challenges on liver kidney function tests. And what they found in advanced cirrhotics में after the fasting ये parameters ये worsen कर गए थे. So the congestion index increased from fasting to postprandial status, and the increase was more as the patient were in child class A, B, or C. Similarly, the liver functions deteriorated and clinical deterioration happened. So on the basis of these, the child class E, the portal venous pressure was more,
the West resistance was affected, the portal blood flow were affected. And what we can see on this is cirrhotic patients अगर हमारे पास आते हैं तो हमें उनका रिकॉर्ड को देख के ये देखना है कि almost 4-6 weeks ago रमजान उनकी स्टेटस क्या थी. अभी भी ये आपने उसका फुल डिसीजन लेनी होती है. अगर पेशेंट इज इन चाइल्ड क्लास ए, द पेशेंट कैन फास्ट, लेकिन द पेशेंट मे नीड पीपीआई फॉर अल्सर्स. अगर maybe these patients brain ligation, nutritional status and weekly follow-up are very important in these patients. Agar patient is in child class C, should not fast. Child class B, again should not fast. और अगर वो रोजा रख के भी जा रहा है तो you have to discontinue that अगर उसमें कोई decompensation होती है. This is a very interesting, जो कि in the review, one of the review article, very good references. And to me, this was a surprise as well. This is the fasting means a decrease in caloric intake by 30 to 60%. We all know that. Cancer is characterized by metabolic dysregulation. We all know this with increased glucose consumption. ये mechanisms हैं. अगर fasting है और patient deprive करता है caloric intake से, what does at cellular level, it hampers HCC cell growth and glucose uptake by the HCC cells. तो ये sorts of inhibitory effect of the fasting on the HCC. एक article में काफी बेस हुई थी सेलुलर लेवल पे. नटशेल ये थी कि probably HCC with decompensated liver cirrhosis, definitely they should not fast. But if they've got the compensated cirrhosis and if they are on sorafenib, they may fast, and even fast may be having a good impact on that. It will help the sorafenib to arrest the growth of those malignant cells. तो ये एक hypothetical काफी अच्छा उस पे discussion हुई थी. So this is another thing I think one can have some sorts of observation studies or pilot studies, या वो चीज हम कर सकते हैं कि अगर आप HCC well compensated cirrhosis में है या with normal liver है और sorafenib पे, of course sorafenib is that कि जब हम patients वो spread कर गया है, we give sorafenib and BCC child class C. लेकिन अगर कहते हैं कि there is no decompensation, तो probably fast can, and we will monitor. लेकिन एक possibility है तो hypothetical के the fasting will help sorafenib to control that tumor progression. So in coming to the liver cirrhosis categories, child class A may fast, but close monitoring is warranted over here. Child class B and C should refrain from fast. Based on those studies you may have such share key, this should be our guidance or our advice to the patients. And of course हमारे patients के child classifications at the time जब हमारे पास है उस वक्त नहीं करेंगे, उससे 4-6 हफ्ते पहले का एक रिकॉर्ड देखेंगे कि पेशेंट कैसे जा रहा है, या उनसे भी पहले उसकी स्टेटस क्या है, कि अब ये टैबलेट्स हमने उसको ड्रैग कर गए BCC पे, या वाकई पिछले कई हफ्तों से या 3-4-5-6 महीने से चाइल्ड क्लास C में जा रहा है या किस तरह जा रहे हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा जो डायग्राम बन रहा है इसमें हम यहाँ तक पहुंच गए कि हेल्दी लिवर वाज फास्ट, एक्यूट हेपेटाइटिस डोंट फास्ट रेड, chronic hepatitis में it was the green and yellow, liver cirrhosis में this is the, if patient has got child class A, it's a yellow line कि आप patient can fast but with close monitoring. But if my patient is in child class B or C, definitely we will say don't fast. Coming to the liver transplant, जो कि हमारा एक last scenario है हमारे liver disease patients का, what the data says over here, ये एक study थी जो कि publish हुई थी in 2000, it was, sorry date मैं miss कर रहा हूँ, लेकिन it is a recent study. And the aim was to, there are only 2 studies available on liver transplant scenario in Ramadan. And this study aim was to study the safety of fasting, the effect of immunosuppressive levels, and biochemical hematological change. Retrospective study थी, 96 liver transplant patients थे जो कि follow हो गए थे transplant clinic में कतर में. We all know हमारा दिल भट्ट साहब, शायद उसको इसकी ज्यादा इल्म होगा. He is the
very lead hepatologist in the Qatar Doha. So this was the 2008 से 2020 तक 96 patients को उन्होंने follow किया, and what they found कि different parameters, albumin, bilirubin, alkaline phosphatase, HDL, cholesterol, तमाम variables उन्होंने check किए, not fasting पे, fasting पे, and what they found कि there was no significant difference in tacrolimus levels between those who observed fasting and those who did not observe fasting during Ramadan. एक तो ये point था. Second point was significantly higher albumin, total proteins, cholesterol, creatinine, hemoglobin, and platelet count before Ramadan and after Ramadan compared to the during Ramadan. तो ये एक और observation थी, and they found that there is no significant difference detected in any of the biochemical hematological indices between patients who fasted and who didn't fast. So their conclusion was कि fasting का इतना असर नहीं पड़ता. And what they concluded कि patients with stable graft function, this is important, stable graft function in the absence of cirrhosis can fast safely, and no predictor they found for deterioration of liver function of fasting कि जो कौन से predictor होंगे कि हम अगर वो pre Ramadan हमारे पास हो तो हम कह सकें कि ये patient शायद वर्सन कर जाएगा. They didn't find any predictor. The dietary intake of protein should be increased. ये इनकी recommendations थी to overcome decrease in the protein level during fasting. We all know कि इसमें malnourishment होती है, caloric mostly भी हम पर ज़्यादा carbohydrates levels उस पे जाते हैं, protein की थोड़ी सी वो deficiency आ जाती है, तो this should be taken care of. The other study, this is another study available, only two, as I said, only two studies I could found on the liver transplant scenario. This was by the Montasser et al., which published their studies in 2020, 45 liver transplant recipients in Cairo, and what they found statistically significant difference between pre and post fasting stage in terms of the creatinine. What they found कि creatinine में एक फर्क आ रहा था, तो what they suggested कि fluid intake should be very good and regular is mandatory and for these patients. What to my mind, what we suggest as a whole, during the first 1 to 2 hours of liver transplant, the patient should not fast. The reason is tacrolimus की frequency of the dosage or maintenance levels of the immunosuppressants, और ये अभी आइंदा चंद सालों तक भी, मेरे ख्याल 2-3 सालों तक भी, the Ramadan is in hot weather, so they can be dehydrated and which can lead to the nephrotoxicity. Yes, अगर हमारे patient after 1 to 2 hours है, stable है, so yes, they can fast, but provided there is no graft rejection, कुछ नहीं हुआ था, levels is stabilized हैं, patient is not on insulin. This is again another thing. These are patients, they are diabetics as well, most of them, and renal functions are normal. तो अगर हमारा patient biochemically stable है, hemodynamically stable है, उनके immunosuppression stable dosages पे हैं, so yes, they may fast. Lekin again, this is a yellow color. The close monitoring is very, very important in these patients. So what I try to give you the 3 categories. The green is जहाँ हमारा liver का patients should fast. अगर उस liver healthy है, past history of acute hepatitis है या chronic B hepatitis B C है, treatment नहीं है, ठीक ठाक है, well they okay है, the patient should fast. या अगर मेरा patients NAFLD पे है और बाकी कोई ऐसी comorbidity नहीं है जो कि stop करे मुझे ये कहने से कि रोजा रखें, these 2 categories, these patients should fast. Those who should not fast, अगर मेरे patients acute hepatitis है उसको, या मेरा patient cirrhotic है और child class B or C में fall कर रहा है, so these are the patients who should not fast. In between, my patient, if he's in chronic hepatitis B or C with or without antiviral therapies, or my patient is cirrhotic but in very well compensated, or post liver transplant, stable liver status, stable immunosuppressants therapy, these patients may fast, but the close monitoring is warranted in such patients. So with this, I'll pay thanks, and I'll pay thanks to all of my ECHO team. These are the names, and this is the graphics, this is a cartoon.
which has been given to us by our dear friend Dr. Nadeem Tehami, and I'm thankful to him as well, as he shared with me the review, very good review article. And from the whole ECHO team, we congratulate him on the newcomer princess in their home. So with this, thank you very much. And now I'll stop sharing my screen, and it's back to the Dr. Asad and Professor Altaf Alam. Thank you very much. Assalamu alaikum, Bushra. You have questions? I'm sorry. Ji, Walaikum Salam. Yes, we have so far only one question has been posted in the chat, and you posted it. Professor Farooqi, Assalamu alaikum. Very nice talk, very elaborative and informative. Thank you very much. The question from Dr. Asad is that patients on direct-acting antivirals with sofosbuvir and velpatasvir, should they continue? What is the best time for taking this medicine, seher or iftar? And what should the monitoring protocols for patients with the fasting be? So we can divide this, starting with, should they continue with sofosbuvir and velpatasvir? Yeah, if as I said, if their disease status is well controlled and they are stable, yes, they can fast. They should have fast, provided their renal functions are okay, they are well hydrated, and they didn't experience any side effects. And this again, because if this is very important. Suppose now for hepatitis C, we know the treatment is of 3 weeks. So this is one advice that if those patients who are on treatment, we will, I should not say to interrupt that, they can fast. But if we say the trend is increasing, the urea creat or the ALT, bilirubin, for that matter, we can say them, okay, you stop, we observe. But one point is, if you are diagnosed with patients and you think that today, if I diagnose a patient, rather, in fact, I did diagnose 2 patients today, and I told them, well, you keep your fast. After Ramadan, we'll start you on treatment, because there was no hurry for hepatitis C therapies. So this is the way, because at times you don't know, a patient may look very stable, but at times that they can, and if what the time they should be taking, I must say that if they are taking the drugs, it should be with the, but the thing is that the better time will be the iftar, but of course the food and all those things, this is one matter, because if they take with the sari, there is chance that it will be prolonged. It is followed by at least 14-16 hours of the fast, so chance of dehydration. So that is that they can keep, not just after the iftari, it should be just before the tarawih or something like that. That's the best time, because उस वक्त हम पेट इतना फुल होता है कि I don't know उसके absorption की क्या क्या चीजें होंगी, तो ये चीजें होती हैं. And another point is that if my patient is on some way, in one way or another, on the PPIs as well, again तो फिर ये चीज होगी है कि क्योंकि फिर उसकी interactions with the velpatasvir. So this is really something tricky. इसमें है तो असद साहब ने एक क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा, उसमें बड़ी दानिश की बातें, बड़ी राज की बातें हैं. Agreed. What should be the monitoring protocols? You've touched upon this, but if you could repeat it, what should be the monitoring protocols for chronic liver disease patients with fasting? Which labs and how frequently should they be done? Yeah. If my patient is cirrhotic in child class A and they want to have fast, then of course they are the bilirubin, ALT, and the at times maybe plant phosphatase and urea creat. These are important that we should keep an eye on that. And of course, they should be having at least the symptoms for these patients. You see, one thing is that these patients, they may go into the subclinical encephalopathy. But I have seen these patients, you see, ऐसे patients होते हैं जो कि हम कह देते हैं आपको रखें बिल्कुल stable होते हैं. Even those who are just the no decompensation, even उनके ultrasound भी अच्छे होते हैं, लेकिन what I have seen, they go into some sorts of subclinical encephalopathy. वो नमाज भूल जाते हैं, वो कहते हैं जी तरावी की समझ नहीं आ गई है. तो I think this is very important.
कि तो क्लिनिकली उनको जरा समझाना भी चाहिए कि अगर आपके पेशेंट्स को फॉरगेटफुलनेस हो रही है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मे भी उनके पैरामीटर्स हो के, तो एक तो उनको फैमिली को समझाना होता है, उसको भी समझाना होता है, प्लस ये कि जो हमारे लिवर फंक्शंस हैं, बिलिरुबिन, एएलटी, यूरिया, क्रेट, ये चीजें ऑफ कोर्स दे शुड बी, एल्बुमिन पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो 6 वीक्स के बाद ही पता चलेगा, तो दीज आर दी पैरामीटर्स, पीटीआईएनआर इज अनदर थिंग, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका आप मॉनिटर करें। लेकिन अगेन आई मस्ट से कि ये पेशेंट्स, आई डोंट नो कि आप लोग क्या ऑब्जर्वेशन होगी, लेकिन मेरे तो सिरोटिक्स में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये इंसेफेलोपैथी है, जो कि मिनिमल है या अपनी ग्रेड 1 है, और ये पेशेंट बड़ा आसानी होती है जी, आप नमाज तो नहीं भूल रहे, आप रकातों में गलत तो नहीं हो जाते, कभी कभार जो पानी पीना शुरू कर देते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आया मेरे पेशेंट उस तरफ तो नहीं जा रहा। Right. Thank you, Professor Farooqi. I see that Professor Zahid Yassin Hashmi is there amongst us. Welcome to the session, Professor Zahid. We would appreciate a few words from you since you have had an immense experience managing patients with chronic liver disease. Professor Zahid? I guess he has signed off. I think he has left. He was there a while ago. Professor Kashif, would you like to tell us about your experience with managing patients with chronic liver disease during the month of Ramadan? जी, thank you Bushra, thank you very much, Dr. Farooqi ने मतलब excellent talk, तो I was really impressed जिस तरीके से सब कुछ बनाया, और I agree with him. एक्चुअली जो क्रॉनिक लिवर डिजीज बेसिकली व्हाट वी डू इज के इसकी आप स्टेजिंग करते हैं ना, क्रॉनिक हेपेटाइटिस का पेशेंट है, दे कैन फास्ट और उनके हिसाब से है, इवन चाइल्ड एसिरोटिक पेशेंट्स, उनको विद सम प्रिकॉशंस हम बताते हैं कि आपने अगर करना है फास्टिंग करें, लेकिन उसमें एक चीज और भी बताते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते हैं पूरा तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, बीच में 2 दिन छोड़ दें, कर लें, जैसे हमारे यहाँ जी जुमे का रोजा रख लिया, यूं कर लिया, इस तरीके से है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो डिकम्पनसेटेड और इवन जो के चाइल्ड ए और बी में भी होते हैं, तो मैं तो सीधी सी बात है, उनको मैं तो कहता हूं कि आप बीमार हैं, आपने रोजा नहीं रखना, उस बारे में तो मैं तो उनको कुरान का रेफरेंस दे देता हूं कि बीमार को और मुसाफिर को रोजा माफ है, आप जाके पढ़ लें, और ज्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं बिकॉज उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। मेरी अपनी प्रैक्टिस तो ये है, और यही मेरा ख्याल है कि हमें करनी चाहिए, उनको फोर्स करना चाहिए कि रोजा ना रखें, बिकॉज उससे उनकी जो डिकम्पनसेशन या उनकी बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं उस हवाले से। और इसके अलावा क्रॉनिक हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को तो यूजुअली वही आस्क के जी आप रख सकते हैं, आप देख लें, अपनी स्ट्रेंथ खुद देख के आप फैसला करें। जो फारूकी साहब ने कहा ना कि वहाँ थोड़ा सा हम भी बायस्ड हो जाते हैं कि उनकी मर्जी जो है वो चल जाए, तो मेरा तो ये ओपिनियन है इसमें। डॉक्टर बुशरा। Thank you, Dr. Kashif. Ji sir, I accidentally muted myself. Dr. Ali Haider raised his hand. Dr. Ali Haider, do you have a comment or a question? Dr. Ali Haider? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, very nice and elaborative talk by Dr. Farooqi Saab. Just one question: child class A patient having one episode of autosystemic encephalopathy, should they go for fast or not? One should, my simple answer will be not. If still they want कि हमने करना है तो उसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए। जिस तरह के मैंने बोला कि इवन इंसेफेलोपैथी जो मैंने देखा है कि ये दिस इज द मोस्ट थिंग कि जो सबसे पहले और वो आती है, उम्र हम इसको नोटिस नहीं कर पाते कि जी कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल आपसे ठीक ठाक बातें कर रहा होगा, अचानक वो भूल जाता है कि यार मैंने क्या बोला था। आई थिंक अगर उसको इवेंट हुआ है तो मेरे ख्याल में दिस पेशेंट शुड बी टोल्ड कि आप फास्ट ना करें। फिर भी अगर वो बहुत ज्यादा इसरार करते हैं, मेरे एंड पे तो ये होता है कि अगर आप किसी से कहें कि जी आप रोजा ना रखें, कहते क्यों जी मैं मुसलमानी से चला गया, मैं तो सिर्फ बीमार हुआ हूँ, तो यहाँ पे बड़ा इशू होता है मेरे एंड पे। तो लेकिन स्टिल दे वांट बहुत क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए। लेकिन आई थिंक अगर कोई भी इवेंट हुआ है, डिकम्पेंसेशन का है, एची का हुआ है, ब्लीड हुआ है, साइटिस हुई थी और डायरेक्ट पे कंट्रोल है, दे शुड नॉट फास्ट। ये बात
ये एक येलो लाइट में है और यहाँ पे जो है ना दे शुडंट. जी प्रोफेसर अल्ताफ साहब का की क्या ओपिनियन होगी ऐसे उसमें कि पेशेंट who is very much stable लेकिन उसकी प्रायर हिस्ट्री है इंसेफेलोपैथी की या उसको ब्लीड हुआ है, तो what will be his advice on that? I think, like you very rightly said, that any patient with cirrhosis who has had upper GI bleed, ascites, or encephalopathy, technically this is decompensated cirrhosis, so they should not fast. And I like this traffic light concept, not only with fasting in patients with liver disease, but in COVID era, the countries are actually labeling according to the risk. They are, giving them red or green signal. So I like this because it makes things very clear. So I certainly would ask my patients with decompensated cirrhosis, that is somebody who has had an episode of upper GI bleed, encephalopathy, or ascites, either currently or in the past, should not fast. So, one can argue, Professor Kadir has just given a very good concept that if you can avail the facility that God has given you, you should certainly go for it. But, if you feel sicker and you ask the physician, then we have to give the answer based on certain hard facts. So decompensated cirrhosis, red light, don't fast. I think, Bushra, if you allow me, I would like to have a comment from Farooqi Saab, and Altaf and Kashif Saab are also here. What we see generally with fasting and also with Umrah and Hajj, these are all religious issues. What happens is patient does fast, they go for Umrah and they come for Hajj, they come back, they bring Khajur and Abe Zamzam and everything for you. And then they decompensate in 3 to 6 weeks time. That's what I have seen. It's not what happens immediately. It happens with a lag. And by the time that, and they say that, you were terrifying me. You said you won't be exerting that much. You shouldn't be traveling that much. We went there. Maybe it's their willpower or, all the passion they have for the religious acts. But then the decompensation happens down the road. I wonder if it's the same experience with you, Farooqi Saab? Dear said, yes, very true. Many times I have seen this. Still, I remember one of my patients, he used to go to Umrah every year, and he was B cirrhotic and very much compensated. And whenever he used to come back and used to go into some sorts of decompensation, then again, okay. And the last time when he was brought by his family, he was completely, almost gone. He was there for this Ramadan fasting there in Medina or Makkah. He was at that time, and he died. So this is a very frequent observation that they come and maybe this decompensation has started not to the level. So this is true that whatever, but there are a good number of my patients, I can recall my friends, even one of my class fellow who went there and then he died there because of this thing. He was diabetic and some sorts of NAFLD and all those things. So this happens. Yes, this is very true. Okay, Dr. Nadeem Tehami has just joined. Nadeem, I've spotted you. So you have to give account of fasting in UK. It's a long rosa there. So we'd like to hear from you. Assalamu alaikum. I'm extremely sorry I missed the meeting from some issues at home. We've been blessed with a baby girl, so I'm really sorry.
I'm really I'm not honestly sure what the where were you and what the discussion was, so I'm not entirely clear what I can add at this stage. Sorry. Yeah, I appreciate that. So we just saw you and got you in. No, Bushra? I've just walked in. Sorry. That's all right, Dr. Tehami. Many congratulations over the new addition to the family. There is a short question from Dr. Aksa. She wants to know whether endoscopies should be done during fasting or not. How safe are they? Professor Farooqi. Endoscopy, I mean, diagnostic endoscopy for some sorts of, depends upon whether you are doing the diagnostic endoscopy, patient has got epigastric pain or something like that. And if you want to ask whether this will make the रोजा पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो डेफिनेटली अगर टूटता नहीं है मुकरू तो हो ही जाएगा. इसमें तो जरा मेरे ख्याल में anything going across the pharynx ये तो चीज है. But if this is indications like hematemesis हुई है, कोई और चीज हुई है, फिर तो you have to go about. लेकिन what I say to my patients preferably कि वो अगर हमारी प्लेन एंडोस्कोपी है जो अनअवॉइडेबल है और इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी है, then we have to go. Otherwise हम कहते हैं कि जी कल आप रोजा ना रखें, आ जाए, हम आपका वो एंडोस्कोपी कर लेते हैं. लेकिन ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे. कोई मेरा दोस्त कहता है कि जी ये तो कुछ नहीं, हम कुछ खिला तो नहीं रहे हैं, सिर्फ स्कोप भी पास कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल में कि टू माय पर्सनल फीलिंग्स तो हो ही जाता है, टूटता भी तो डेफिनेटली होगा. हम जो है ना वॉश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं. लेकिन इस पे आई डोंट नो कि अल्ताफ साहब का या साहब के काशिफ भाई के क्या कमेंट्स हैं, लेकिन डिपेंड्स अपॉन कि हम क्यों एंडोस्कोपी कर रहे हैं. Professor Kashif, what do you think about this? आप रोजा तोड़ते हैं कि नहीं तोड़वाते इस तरीके से? नहीं, रोजा तो बेसिकली इफ यू आर गोइंग फॉर एंडोस्कोपी देयर शुड बी नो रोजा, नो फास्टिंग. और फास्टिंग के साथ हम बुलाते जरूर है उनको. मैं अदर देन रमजान, अगर किसी को मैंने बताना हो तो मैं उसे ये कहता हूँ कि एनपीओ समझाना होता तो मैं कहता हूँ कि 12 बजे तुम्हारा रोजा शुरू हो जाएगा. बट इट डजंट मीन कि जो है उसका मेरे हिसाब में, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि उसका रोजा नहीं रहता अगर हमने एंडोस्कोपी की. और जैसे एज यू सेड कि वो हम अंदर वॉश भी करते हैं, और बाकी सीधी सी बात है थ्रोट स्प्रे है तो रोजा नहीं रहेगा. जहां तक डॉक्टर अक्सा की बात है कि एंडोस्कोपी होनी चाहिए, कि उसके लिए बिल्कुल अगर तो इंडिकेशन बनती है तो उसको रोजा छोड़ना होगा उस दिन, और उसकी एंडोस्कोपी की जा सकती है. इसमें उसको रोजा जो है वो उस दिन वो छोड़ेगा और फिर हम करेंगे. हाँ, डॉक्टर के लिए जिसने करनी है उसके रोजे को कुछ नहीं होगा एंडोस्कोपी करने से, करने वाले को. लेकिन जिसकी हो रही है उसका रोजा नहीं रहेगा. मेरा ये कंसेप्ट है. Nadeem Tehami, what is your opinion on this? So I think this, I'm again not qualified enough to comment on. There is a bit of a religious matter here as well. I personally think that a person who needs an endoscopy is not healthy enough to fast. But again, I'm not qualified enough to comment. And I agree with Dr. Kashif Malik completely, and Professor Farooqi as well. Gee, I totally agree. You will only do endoscopy during Ramadan in patients to screen for either tumors. You can delay screening endoscopy for varices or those who are bleeding. And these are emergencies. So certainly these people should not be fasting, and they should come, of course, they should come NPO, but not a proper fast. Thank you. One last question, very short. Dr. Ravi Raj wants to know why we are saying that there is an increased chance of the patient decompensating if the cirrhotic patient goes and fasts. So what can be the cause of this? The cause of decompensation during fasting in a patient with cirrhosis? Professor I think I showed a couple of slides. In nutshell, caries, these patients, cirrhotic patients, they are sort of malnourished. अगर decompensated इनकी ज़्यादा है, चाहे class BC में ज़्यादा malnourishment, dehydration, उनके drugs जो routine की drugs है वो affect कर जाएगी. फिर मैंने बोला कि अगर ये fast रखते हैं, उनकी वो postprandial hyperemia होता है जो कि
पोर्टल प्रेशर हाई कर पाता है एंड द पेशेंट कैन ब्लीड, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो जाती है, तो तमाम चीजें डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डिकम्पेंसेशन इनमें होती है। तो ये एक चीज है कि और उस पे उस सेक्शन ऑफ सिरोसिस probably my dear colleague have missed those, उसमें तमाम मैं पहले बता चुका था पैथोफिजियोलॉजी की क्यों हम बोलते हैं कि सिरोटिक्स में हमें केयरफुल रहना चाहिए या डिकम्पेंसेट करेंगे। Right. दूसरी Thank चीज डॉक्टर बुशरा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर बुशरा, दूसरी चीज ये होती है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे क्विट टेकिंग देयर मेडिकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि रेगुलर मेडिकेशन ही ले रहे होते हैं, जो भी आपने दिया है, बीटा ब्लॉकर दिया है, डायूरेटिक दिया है या कुछ दिया है, उससे इनका प्रॉब्लम ये होता है डीकम्पनसेट हो जाती है। सेम इज द केस एज डॉक्टर असद मेंशन कि जो लोग उम्रा और हज पे जा रहे हैं, वहां पे जाके खजूर और आबे जमजम तो उनका बिलीफ, बिकॉज दिस इज द बिलीफ कि इससे हम बेहतर होते हैं, तो ये दे क्विट मेडिसिन। फिर इनकी बाउल हैबिट्स रेगुलर नहीं होती हैं, इनको इंसेफ्लोपैथी अगर ये कुछ हो रही है, वो चीजें ये इसको इग्नोर करते रहती हैं। और डॉक्टर इज वेरी राइट, आई हैव सीन पेशेंट्स कमिंग विद डीकम्पनसेशन व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम उम्रा और हज, और उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। सम टाइम वी लूज द पेशेंट। तो ये बेसिकली फास्टिंग में एक डीकम्पन की वजह इनकी मेडिसिन छोड़ना भी होता है। Ji sir, thank you, sir. Sir, I would like Professor Altaf to give concluding remarks, and then we can finish this session. As a reminder for those who might have missed out, there is a link that has been posted by Mr. Harris Morris for use for viewing of this talk all over again on YouTube. Professor Altaf. Thank you very much. It's really very heartening for being the course director for Project ECHO. It's really very heartening to see interactive audience and a very good speaker. So nothing gives me more pleasure than that. And I've seen all the, a very good speaker today, Dr. Farooqi. Thank you very much. And for all the participants for taking time out of their busy schedule and sharing their thoughts, asking questions. So thank you, everyone. And over to Asad for concluding remarks. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Farooqi Saab. It seems like it will be the last talk before Ramadan. So we'll all be taking a break, charging our batteries, inshallah. And please stay tuned. We will be coming with a lot after Ramadan. We have been working a lot. As I told you, palliative care, ECHO is one which is going to start. And we are working on a lot of other things. And inshallah, we'll be keeping you posted on that. I'm extremely grateful to Pakistan Society of Hepatology for the partnership with PARSA ECHO Pakistan and Frozen's Laboratories, who have been a great help. And my team, our administrator, Kiran, Uzair is our coordinator, Haris, who looks after the IT, and Salman, who's there all the time. And I tell you, they will stay for another 45 minutes when the recording and all this session will be downloaded, which will be available on YouTube. So it's almost midnight when they leave. So I am grateful to everybody. Uzair, it's over to you. Still we meet again then. Thank you very much, sir. Till next time, Allah Hafiz to all of you.